So, hello everyone. It gives me very immense pleasure to again do this episode of Diabetes Bytes. I think it is going to be one of the very special episode because today, on occasion of Women's Day, I will first take this opportunity to wish all the beautiful women a happy Women's Day across the globe. And by definition, a woman with voice is a strong woman. I would quote Melinda Gates here. So today we have, I think, at least few of them along with us. So let me introduce each one of them. We have Dr. Negalur. She is the consultant diabetologist from Mumbai. Happy Women's Day. Thank you so much and wish you too. We have Dr. Rucha Mehta, a consultant endocrinologist from Apollo Hospital, Ahmedabad, and you can see she has joined us from a run. So yes, she is signifying the importance of health. A very happy Women's Day. We have Dr. Divya Saxena with us, Director of Saxena Multi-Specialty Hospital. Very happy Women's Day. Thank you. We have Dr. Annie Beatrice, Associate Professor from NIMS Hospital, Telangana. A very happy Women's Day, Annie. Thank you. Hello, everyone. And then for the day, we have our moderator, Dr. Purvi Chawla. She's the Director of Leela Hospital in Mumbai. Happy Women's Day to you too, Purvi. Thank you so much, Dr. Faraz. So without taking much of time, I will hand it over to Dr. Purvi to take it from here. Sure, thank you so much, and a wonderful Happy Women's Day to all. In fact, this week is going to be celebrated as International Women's Week by RSSDI as well. So, welcome to RSSDI Diabetes Bytes. आप सभी का खूब स्वागत है और खूब खूब बधाइयाँ सभी महिला प्रेक्षकों को खासकर से हमारी तरफ से। आज मार्च 8 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस बार का विषय है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आज लैंगिक समानता जरूरी है। सो विद दैट हम खास करके डॉक्टर्स जो कि हेल्थ केयर सेक्टर यानी स्वास्थ्य सेवा में जो लोग जुटे हैं वो खास ये कह सकते हैं कि महिला स्वास्थ्य में काफ़ी पीछे छूट रही हैं। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ही देखें, उनमें खासकर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और हृदयवाहिका रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या दिल और धमनियों की बीमारी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु की समानता भी महिलाओं में ज़्यादा है इन बीमारियों से। और उसमें जोखिम कारक स्थितियाँ जैसे कि मोटापा है या गतिहीन जीवन शैली है और अत्यंत और हानिकारक आहार भोग है और प्री डायबिटीज़ या गर्भकालीन मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सब स्थितियाँ हैं जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं महिलाओं में। कई बार स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं महिलाओं में जो कि कोविड के समय और भी ज़्यादा विस्तृत हो गए हैं और हमें उन्हें सुधारने के लिए उनकी पहले तो हमें उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। आखिर एक महिला ही है कि जिसका स्वास्थ्य और जीवन शैली में अगर आप सुधार लाएं तो पूरे परिवार और पूरे समाज के स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। So with that, we also have the upcoming National Gestational Diabetes Awareness Day, which is on March 10th. और आज with all these women stalwarts that we have today from the field of medicine, हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। So without much ado, may I invite Dr. Benny ma'am for the first question. Ma'am, if you can explain to us what is this close connection between, or is there a close connection between diabetes and hypertension? Thank you, Dr. Purvi, for this question. And all my colleagues here and all the women out there wish you a very, very
Happy Women's Day. Now discussing about these chronic diseases, yes, there's a link between diabetes and hypertension. Both are chronic diseases and both require treatment lifelong. Both these have common risk factors. There is a genetic influence on these, and they are largely hereditary. And if you look at why these diseases are on the rise all over the globe, it is basically the sedentary lifestyle and the calorie dense food that is being consumed that has changed over the generation. And COVID has pushed it into a larger problem. And working from home has made us sitting all the time in front of our computers, and that has increased the weight and obesity in both the youngsters and adults, and also the older people who have not had the opportunity to go down for a walk. And that has promoted diabetes and hypertension lately in the last 2 years. Besides, the food that we are eating is calorie dense, and generally, outside food is rich in carbohydrate and fat. But even people who are eating at home, they say, I'm just eating at home, so how can I put on weight? The portion sizes of the food at home have increased, and that gives rise to obesity and overweight. And this obesity basically is in the abdomen. The increased fat or the visceral fat is the one that is the culprit, and that has collected a lot of abnormalities that gives rise to chronic diseases like diabetes and hypertension, and also abnormal lipids known as dyslipidemia. So we see 33 of our Indian adult population has hypertension, which is 1 in 3. And 14 to 15% of our population have diabetes. So we have more than 75 million diabetes patients in the world. And diabetes has an influence on hypertension because it basically has inflammation and endothelial dysfunction, which means that there is a problem with the blood vessels in the circulation that can make them stiffer and give rise to high blood pressure. And women have additional problems. So you see, gestational diabetes that Dr. Purvi just meant can give rise to future diabetes. Hypertension in pregnancy can give rise to hypertension in women in the future, and both these diseases can make them susceptible to cardiovascular disease and increase mortality. Also, preterm birth and autoimmune diseases that increase inflammation, breast cancer treatment, and also depression can all promote both these chronic diseases. Besides, what I want to stress today is the weight gain that happens during pregnancy. And this weight gain, actually, everyone in India says you have to eat for two. There is a large weight gain during pregnancy. This weight gain is retained even after delivery, and that promotes obesity and all the lifestyle disorders. Oral contraceptive pills can also contribute and is a high risk factor for diabetes and hypertension. And now the alarming rise of premature menopause. You see, menopause used to happen after 50, and now we are seeing young ladies 35 and 40 who are already in menopause. And menopause decreases the hormones and gives rise to stressors, and also promotes hypertension and diabetes. So yes, the two diseases are linked, and of course they are linked to other conditions like PCOS, etc. So Dr. Beatrice Anne, can you just inform our audience as to what is PCOS and what is pre-diabetes? If you can elaborate on this, I think it will do benefit to our audience. Thank you, Dr. Benny, for the question. A very good morning to all of you, and a very happy Women's Day to all the lovely ladies out there. So the question is PCOS. So PCOS, or polycystic ovary syndrome, is a condition that can cause irregular periods, acne, unwanted facial hair, and even hair fall. So PCOS can present at various phases of a woman's life. So it can present as irregular cycles or acne earlier in life, or sometimes after marriage, women can come to us with infertility. And later on, they might come to us with metabolic complications like diabetes and hypertension and abnormal cholesterol levels and cardiovascular risk. So if you look at it, most but not all ladies with PCOS are overweight or obese. And insulin resistance
is significant in PCOS. Approximately 10% of women with PCOS will have diabetes, type 2 diabetes, by 40 years of age. And the stage prior to developing type 2 diabetes is prediabetes. And up to 40% of women with PCOS could develop prediabetes. So, this is important because this is a stage of intervention and a possible prevention or a delay of type 2 diabetes. And that is the reason we screen all women with PCOS for metabolic complications. So there is a strong link between PCOS and prediabetes. So we also know that PCOS is a risk for developing gestational diabetes mellitus as well. So let's ask Dr. Purvi, what are the consequences of gestational diabetes mellitus, and what are the possible interventions that we have? Sure. So first of all, let's understand what gestational diabetes is. It's the first diagnosis of hyperglycemia during pregnancy. तो सबसे पहला निदान जो मधुमेह का होता है गर्भावस्था में, उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं। और जब वो पहले कुछ महीनों में होता है, 5 से 6 महीने में पहले ही निदान होता है, तो वो शायद पहले का डायबिटीज़ जो जिसका निदान पहले नहीं हुआ है, वो ही है। यानी कि इट मोस्ट लाइकली इट इज़ प्री-जेस्टेशनल डायबिटीज़ व्हिच इज़ डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो सेकंड हाफ में होता है, वो हम कह सकते हैं कि वो प्योर प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ है, यानी गर्भकालीन मधुमेह। अभी उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं बच्चे पे भी और माँ पे भी, और उसमें भी थोड़े इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस है और थोड़े लॉन्ग टर्म। तो वो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि शुगर्स एक तो वी नीड टू डायग्नोज अर्ली, और उसके लिए हमारा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोसेस है इंडिया में, जो कि हर गर्भावस्था महिला को सबसे पहले विजिट में ही हम शुगर की टेस्ट करते हैं उनकी, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद हम शुगर्स को अच्छी तरह कंट्रोल में रखें। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बताऊँ तो उसमें बच्चों में कंजेनाइटल एनोमलीज़ या जो जन्म से ही विकृतियाँ होती हैं वो हो सकती हैं, या शोल्डर डिस्टोशिया, या बच्चा साइज़ में बड़ा हो सकता है और बर्थ इंजरीज़ हो सकती हैं। माँ को भी सिज़ेरियन सेक्शन हो सकता है, या प्री एक्लैम्पशिया हो सकता है, यानी हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और ऐसे सब बहुत सारे अक्यूट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और बच्चा गर्भ में उसकी जान भी जा सकती है, ये जानलेवा भी हो सकता है अगर अच्छी तरह कंट्रोल नहीं किया गया तो। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में ये देखा गया है कि जिन बच्चों की माँओं को गर्भकालीन मधुमेह होता है और बहुत अच्छे कंट्रोल में नहीं होती है उनकी शुगर्स, आगे चल के मोटापा है, प्री डायबिटीज़ है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनमें बहुत जल्दी देखा गया है। और यही सब चीज़ों से डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है। और ना केवल ये जनरेशन में, लेकिन उसके बाद वाले जनरेशन में भी ये पास हो सकता है। तो इसी एक ये विशियस साइकिल जो बुरी साइकिल हो जाती है, उसे हम तोड़ सकते हैं अच्छी तरह शुगर्स को कंट्रोल करके। जी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए तो ख़ासकर एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक डाइट प्लान फ़ॉलो किया जा सकता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बराबर हो, कार्बोहाइड्रेट्स की बराबर हो और फैट्स की भी बराबर हो, विटामिन सप्लीमेंटेशन भी बराबर हो। और और इंसुलिन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है शुगर्स कंट्रोल में लाने के लिए, और उसके अलावा एक ही दवाई है जो अप्रूव्ड है अपने इंडिया में, जो कि गर्भावस्था में दी जा सकती है मधुमेह के लिए, मेटफॉर्मिन। इसके अलावा औरतों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वो फिजिकली एक्टिव रहें, अच्छी तरह एक्सरसाइज भी करें अगर उनको कोई ना मनाही नहीं है। और
साथ में वो जितना खाना है और ब्लड शुगर्स भी बराबर से चेक करती रहें रेगुलर समय समय पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम गर्भकालीन मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज से हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं और एक जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। So with that little bit on gestational diabetes, मैं डॉक्टर रुचा मेहता को लाऊंगी पैनल पे और मैं पूछना चाहूँगी उनको कि ये तो हो गया एक रिप्रोडक्टिव एज के बारे में, लेकिन मेनोपॉज क्या होता है और उसके लिए कोई खास एज है या इज देयर अ physiological age range that matters, especially in view of non-communicable diseases? Yes, thank you, Dr. Purvi, and फिर से Happy Women's Day to all the doctors on the panel, all the lovely women out there, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आज का हमारा ये लाइव शो, उन सभी को Happy Women's Day. तो मैं गुजरात से हूँ, तो हिंदी के साथ थोड़ी गुजराती भी मिक्स कर लेंगे, बट आई एम बॉर्न इन बॉम्बे, तो मराठी भी बोल सकते हैं थोड़ा सा. तो नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पैनल पे हम लोग सब ये एज में जाने वाले हैं. तो सबसे पहले मेनोपॉज ये क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि जब हमारे, बहुत ही आसानी से बताए तो जब हमारे पीरियड्स आना बंद होते हैं. सो व्हेन वी डोंट गेट आवर पीरियड्स एनीमोर. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर पूर्वी ने पूछा है कि कौन सी एज में होता है. तो पहले हम सोचते थे कि चलो 10 से 11 की उम्र में पीरियड स्टार्ट होते हैं, और जनरली स्पीकिंग 40, 45, माने आपकी फैमिली में जो हिस्ट्री है, एवरेज एज इंडिया में 45, 46 जितनी है मेनोपॉज के लिए, माने जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं. पर आजकल पता नहीं एनवायरमेंट के कारण, प्रदूषण के कारण, या बाकी के स्ट्रेस, जॉब्स, आजकल विमेन बहुत सारा काम कर रही है, सिर्फ घर का काम नहीं संभाल रही है, हम बाहर भी जाते हैं, घर का काम भी संभालते हैं, तो स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बढ़ गया है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गया है. कोविड के दरमियान 2 साल से हम घर का काम भी कर रहे हैं. तो पता नहीं किसी भी कारण से मेनोपॉज आजकल हम जल्दी भी देखते हैं, तो इससे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं. तो ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि ट्रीटमेंट करना है. एज डॉक्टर्स हमें आप लोगों को राइट सलाह देनी है. आपको भी पता चलना चाहिए कि अगर 3 महीने पीरियड नहीं आया, 6 महीने पीरियड नहीं आया, साल भर नहीं आया, तो इसकी क्या असर हो सकती है. तो नंबर 1 डेफिनेटली आपके मूड पर, माने बोलते हैं ना, मुझे ठीक से नींद नहीं आई, रात को अचानक पसीना छूट जाना, नींद कंप्लीट नहीं होनी, घर में सब पे गुस्सा करना, कुछ तो इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं. दूसरा जो ज्यादा जरूरी है, जो अभी आपने पीसीओएस के बारे में सुना, यही सारे सिम्टम्स, क्योंकि पीसीओएस में भी हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं. उसी तरह मेनोपॉज होने से पहले भी, मेनोपॉज होने के काफी पहले से हमारे हार्मोन्स असंतुलित, माने इम्बैलेंस हो जाते हैं. सो दिस विल पुट यू एट रिस्क फॉर मेनी डिजीजेस जो पीसीओएस से जुड़ी हुई है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और इस सब का हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, या उसके लिए हम प्रिवेंटिव टिप्स, माने उससे बचने के लिए अगर हम खुद अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. मेनोपॉज तक हम बचे रहते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमें बचाकर रखते हैं हार्ट डिजीज से, हार्ट अटैक से. तो ये इसीलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. उसके अलावा ड्राई स्किन है, बाल झड़ना, त्वचा का सूखापन, प्राइवेट एरिया, माने अपने प्राइवेट एरिया में भी सूखापन काफी लेडीज महसूस करती है, तो पेशाब करते वक्त जलन सी हो सकती है, या बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या आपकी थैली नीचे आ सकती है. तो काफी सारे सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम इससे बच नहीं सकते हैं. इससे बचने के लिए, या मेनोपॉज की सिम्टम्स या मेनोपॉज के चिन्ह से इतनी परेशानी ना हो, उसके लिए भी हम काफी कुछ कर सकते हैं. Should I continue talking in that? Yes, please. Okay, तो नंबर 1 इज डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम बोलते हैं, माने अपने खुराक पे ध्यान देना और एक्सरसाइज पे, माने आपको फिजिकली एक्टिव रहना है. डाइट में हो सके तो आप जो भी पैकेट में से खाना खा रहे हैं वो सब मत खाइए, पैकेज्ड फूड्स छोड़ दीजिए. हमारा जो इंडियन खुराक है, खास करके अब दिखाया गया है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन डाइट ज्यादा असरकारक है आपको ये सब रोग से बचाने के लिए. तो जैसे कि नाश्ते में आप सुबह में पोहा सिर्फ लेने की जगह पे,
या कुछ ब्रेड बटर जैम जो मैदे का है लेने की जगह पे होल फूड के आइटम जैसे कि ओट्स का चीला है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, ये सब ले सकते हैं। दोपहर के खाने में आप मल्टीग्रेन का आटा बना के एक दो रोटी, सब्जी, दाल, सब्जी पे ज्यादा फोकस रखिए। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है थोड़ी खुराक कम करके जितना बने उतना जल्दी खा के रात के खाने में सूप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सब्जी पसंद है, खिचड़ी पसंद है, दलिया पसंद है, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरी तरह से प्रोटीन युक्त डाइट रहेगा, अच्छा डाइट रहेगा। और आजकल हम खास मेनोपॉज के लिए फाइबर की बात करते हैं, तो अपनी सब्जियों में, अपने ज्वार, बाजरा, गेहूं, ओट्स में फाइबर की मात्रा अच्छी रहती है। फाइबर ये पदार्थ है जो आपके अंदर से आपके शरीर को, आपके खाने को संतुलन में रख के आपके हार्मोन्स की मात्रा को संतुलन में रखता है। और एक्सरसाइज के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमें सबको पीटी उषा बन जाना है। इट इज गुड इनफ अगर आप डेली मिनिमम 30 मिनट्स चलने को जा सकते हैं। किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ प्लान बनाइए, इससे आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा, आपको बातें करने की मजा भी रहेगी, आप दिन भर की सब जो टेंशन घर की है बात करके भूल जाएंगे। और इससे उपरांत भी ये बहुत जरूरी है कि हर 1 घंटे में एटलीस्ट 5 मिनट आप खड़े होके काम कीजिए। मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, तो आई थिंक आप करते ही होंगे, मगर सिर्फ 30 मिनट दिन में चल लिया इसका अर्थ ये नहीं है। आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि आपका वजन थोड़ा प्रमाण में रहे, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है वो आप देख सकते हैं। ऐसा करने से आप आपके घर वाले सबको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेनोपॉज को लग के कोई सिम्टम्स है, जैसे कि काफी लड़कियों को 30 इयर्स की एज में भी आजकल प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है, तो आप आपके हार्मोन के डॉक्टर जैसे कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेक डॉक्टर से मिलिए। क्या आप हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं कि नहीं, वो लोग डिसाइड करेंगे। इसके अलावा हड्डियों पे असर हो जाती है मेनोपॉज होने से, तो ये बहुत ही जरूरी है कि कैल्शियम है, विटामिन डी, इस सब की मात्रा आपके डाइट में ठीक से होनी चाहिए। और रेगुलर हर साल यू शुड बी गेटिंग योर ब्लड टेस्टेड। गुजराती में बोलने के लिए आप बहुत जरूरी है कि તમે ડોક્ટરના સુપરવિઝનની અંડર બધા બ્લડ ટેસ્ટ once a year કરાવો. So that is very, very important. So I think I will hand it back to Dr. Purvi and we'll go from there. So we would like thank you so much for that very wholesome response, and you explained menopause really well. Thank you for that. We would like our next question to be addressed by Dr. Divya Saxena. Thank you, ma'am, for joining in today, and very happy Women's Day to you as well. Ma'am, so what are your thoughts on this linkage between diabetes and cancer? And is there a particular risk for some cancers that increases with diabetes? And should women be more careful about that? Thank you, Dr. Purvi, for inviting me and for giving me this opportunity. First of all, I must congratulate and wish you a very happy International Women's Day to all my friend panelists over here, and to all the women listening to us, to all of you, and even to male members also of the family, to extend our wishes to their spouses and the female members of their families. तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूर्वी आपने पूछा है कि क्या कोई लिंक ऐसा है डायबिटीज और कैंसर में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई बायोलॉजिकल लिंक एज सच अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी शुगर अगर किसी को है या मधुमेह किसी को है तो उसके अंदर कुछ कैंसर होने के रिस्क डेफिनेटली डबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लिवर का कैंसर की अगर बात करें या पेनक्रियाज के कैंसर की बात करें या फीमेल्स में, औरतों में, महिलाओं में होने वाले एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करें, तो इसका रिस्क डेफिनेटली डायबिटीज में डबल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हर हालत में कि हम अपने आप को इस बीमारी से लंबे समय तक जहाँ तक हो सके बचा के रखें। और जिनको अगर डायबिटीज है तो मेरी एडवाइस है कि उनकी फैमिली में, क्योंकि ये एक आनुवांशिक बीमारी की तरह से भी जानी जाती है, तो अपने बच्चों में शुरू से ही बचपन से ये आदत डालें कि वो अपने वजन को नियंत्रित रखें, एक नियमित रूप से कसरत करते रहें, डाइट अच्छी लें। जैसा कि डॉक्टर रुचा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमें अपनी डाइट को शुरू से नियंत्रित रखना चाहिए, फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए,
जिससे कि हमारा वजन नियंत्रित रहे और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सके, स्पेशली शुगर से। लेकिन अगर शुगर नहीं भी है हमें, तो भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियों से हम बच सकें, जिसमें कि हाइपरटेंशन भी आता है। अगर किसी को शुगर है तो डेफिनेटली मेरा कहना ये है उससे कि अपनी शुगर को हर हालत में आप नियंत्रित रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो समय पर अपना इलाज शुरू करें, जिससे कि किसी भी अवस्था में आपकी शुगर नियंत्रित रहे। और कुछ ऐसे कैंसर्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें हम, या ब्लैडर कैंसर की बात करें, या इंटेस्टाइन में होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें, तो इनके होने के चांसेस भी एक डायबिटीज़ के पेशेंट में 20 से 50% तक ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो तो हैं ही हमारे अंदर, की टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हम कहते हैं तो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है। तो ओल्ड एज अपने में आप में एक रिस्क फैक्टर है, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम इतना चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या डाइट हमारी पुअर है। आजकल जैसे कि बहुत फैशन है बाहर खाना खाने का, घर का खाना ना खाना, या पैकेज फूड खाना, या प्रिजर्व फूड खाना, इन सब से कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि डायबिटीज़ का रिस्क है तो डेफिनेटली कैंसर का रिस्क भी इन सब के साथ बढ़ता है। इसके अलावा अगर खास तौर से शुगर के मरीजों की या मधुमेह के मरीजों की बात करें, तो क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और अगर शुगर भी कंट्रोल नहीं है, बहुत हाई शुगर है, तो उनके अंदर ये रिस्क दुगना हो जाता है। तो किसी भी हालत में वी हैव टू लोअर द रिस्क फॉर बोथ कैंसर एंड डायबिटीज, एंड फॉर दैट माय मैसेज इज टू ऑल ऑफ यू दैट eat a healthy, varied, predominantly plant-based diet, be physically active, and maintain a healthy body weight. This is the key to be healthy and to prevent cancer. आपके किसी भी कैंसर को होने में काफी हद तक आप बचे रह सकते हैं लंबे समय तक. Thank you, Purvi, for asking this question. And my next question is to Dr. Beni. Do lifestyle changes work for controlling hypertension? And what are the factors for controlling hypertension? What are the factors that can help with hypertension control besides medication? And is there any role of yoga or meditation? Over to you, Dr. Beni, please. Thank you so much. Dr. Divya, you have said a lot of it already, and Dr. Rucha Mehta, she just came from a run, and I think she's the model patient for us for sorry, not patient, she's a model doctor for us for lifestyle changes. And basically all these chronic diseases that you heard today, even cancer included in diabetes and hypertension, are basically secondary to an abnormal or changing lifestyle. And therefore we have to bring our lifestyle back to what our forefathers was. That was eating a healthy diet and also exercising. Of course, we will also take care of the other stressors, which I will mention to you. Specifically for hypertension, it is known as the DASH diet. DASH, DASH, stands for Dietary Approach to Stop Hypertension. And this diet is basically high in fruit and vegetables, low in fat dairy products, whole grains, nuts, poultry, and even fish. And it is low in saturated fat, low in salt, low in sweet and sweet containing drinks, and high in fiber and high in calcium and magnesium. So basically our Indian, our mixed, our balanced diet, which we have, our forefathers have taught us. And also there is evidence now to show that the Mediterranean diet, which I just mentioned, helps in actually decreasing hypertension. Besides, one important aspect are the minerals. Minerals, salt and potassium, sodium and potassium. These actually help in the pumping of the cells in the blood vessel walls. And if there is any excess of this, or it is low in some salt, then it will give rise or promote hypertension. So for hypertension patient, the best thing would be to take a low salt diet,
and a high potassium diet. The amount recommended by the WHO is 5 grams a day, but it is very hard to actually calculate the salt in our food. So I would recommend that you take a low salt diet at home, and try and avoid all the salted items that we get from outside, like pickles and chutneys and sauces, ketchup, papad, chips, salted biscuits, cheese and salted butter. Remember, butter has a lot of salt. Canned food, bakery items, ready-made soups, dried salted fish. Chinese food is also high in salt. So we have to minimize this to a small extent. And if you go and read the food labels there, it should read like less than 0.3 grams of sodium per 100 grams. So this has to be kept in mind, because it is very hard for us to read the food labels. Also, we have to increase our potassium content to maintain these pumps in the arteries and the blood vessels. So put high potassium, so consumption of fresh fruits and vegetables and pulses, and basically a vegetarian diet can also go a long way in controlling hypertension. Remember, the crux to lifestyle change is weight loss. If you're overweight, every pound of fat approximately has an extra mile of blood vessels to supply the nutrients and oxygen. And if you have more blood vessels in the body, the more the blood pressure. Therefore, we have to reduce weight. And weight loss is the crux of correction or even prevention of all chronic diseases. Besides that, there are other stresses. Psychosocial stress can also contribute to hypertension and cardiovascular disease. We need to, as much as possible, decrease this stress by practicing meditation and yoga. Evidence has shown that yoga is effective in the control of blood pressure. It also decreases cholesterol, decreases triglyceride, increases the high density cholesterol, and also helps in the prevention of cardiac diseases. Importantly, it has a great effect on the mood, and it promotes actually positive neurotransmitters in the brain and in the blood vessel, which actually relaxes the blood vessels and decreases hypertension. Even meditation of any form can also promote decrease in hypertension. Remember, stop smoking. If one is used to that, excess alcohol is also bad. And basically, exercise at least 5 minutes at several times in a day, or 30 minutes a day, as much as possible in most days of the week, if you need to prevent hypertension. Now, we spoke so much on lifestyle changes and specific diets and exercise for hypertension. Dr. Rucha, you have already spoken a lot about how to reduce weight in the perimenopausal phase and how to lose weight during this time. Can you just in few sentences summarize what you have said? Thank you, Dr. Benny. Yes, absolutely. So just to summarize, I would say that maybe keep the 3 goals in mind always, because 3 things is what we can learn. तो अगर आपको 3 चीजें याद रखनी है और जो आपने सबसे सुनी है, कि पहले तो आप खुद पे ध्यान दीजिए. So overall, sleep, eat well, portion control, exercise और priorities. माने आपके लिए कौन सा काम जरूरी है. सब काम हम नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है. Secondly, मैं कहूंगी कि हमारे लिए जो हम खुद को इग्नोर करते हैं, एनुअल चेकअप एटलीस्ट याद रखे, ध्यान रखे. अगर 1-2 साल हो गए हैं तो हमारे टेस्ट जो भी करवाने हैं टाइम टू टाइम वो करवा के उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है, जो भी एबनॉर्मल आता है, वो आप भूल ना जाइए. अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो ही आप सबका घर में ध्यान रख सकते हैं. एंड लास्टली, ये सारे जो शोज हम कर रहे हैं, ये एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेट योरसेल्फ जितना कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल जाने से, पढ़ाई करने से. So for me, it is these 3 things that really work for all women. Educate yourself. Education is empowerment. You will educate people around you. So learn as much as you can about many different things and find something that motivates you. So I would say that is my short, brief summary. And I would like to now ask Dr. Purvi Chawla if she can also talk to us about mental health issues. Women में तो mental health issues होते हैं, खास करके अगर ये उम्र में डायबिटीज हो जाए, कोई भी उम्र में,
तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इसीलिए अभी जो बात की है, आप अगर ज्यादा कुछ इस पे एनलाइटन कर सकें। Sure. So I think mental health is still a taboo in our society, and कब सबसे कम बात हम mental health के बारे में करते हैं, और ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम कभी अपनी भावनाओं या अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते और उसके बारे में बात नहीं करते. So as physicians and doctors taking care of other women, I think it is imperative that we always ask them a question or two about how they are feeling or how they are doing, because different phases and different hormonal cycles will make them feel differently. And sometimes we may miss things like depression or anxiety, which may even aggravate some of these non-communicable diseases. So इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. कॉमनेस्ट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और एक चीज़ जो डायबिटीज़ से ही जुड़ी हुई है वो है डायबिटीज़ डिस्ट्रेस. सो ये सब तीन चीज़ें बहुत कॉमन है और इसकी मात्रा 2 गुना ज़्यादा होती है, खासकर महिलाओं में और खासकर डायबिटीज़ के साथ. सो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग नॉर्मल अबाउट डिप्रेशन. किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है हमें. आज बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं और बहुत सारे काउंसलिंग मेथड्स भी डेवलप किए गए हैं ये सब चीज़ों को की मात्रा कम करने के लिए. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स. और ये भी है कि मेंटल हेल्थ जब भी ठीक नहीं होता है या हमें कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी, तो उसके वजह से भी हमें डायबिटीज हो सकता है. तो ये एक दो तरफा संबंध है और ये हम तोड़ सकते हैं अगर हम सही समय पर इसका निदान करें और उसमें अच्छी तरह हम ट्रीटमेंट शुरू करें. So, with that, I think I would like to address the next question to Dr. Annie. If you can elaborate quickly on ideal management for PCOS, and which is pre-diabetes condition as we recognize. Yes, Dr. Purvi, that's a very important question, and the answer to which a lot of women would like to know. So, the management of PCOS, it depends on the women's concerns. So, let's say somebody comes to us with irregular cycles, then there are the options of hormonal pills to regularize the cycles. Now, let's say somebody comes to us with acne or unwanted hair growth. So, again, we have the option of hormonal pills plus anti-androgen. So basically, your ovary is going to be producing more of testosterone in PCOS. So to counteract that, we have the anti-androgens, plus or minus again laser for the unwanted hair growth. And sometimes ladies can come to us with infertility. So again, we have options for treatment there and ovulation induction. So basically, helping a lady to ovulate. And but the most important line of management in all this is going to be lifestyle modification. So a good healthy diet. We've been talking about how to choose food, good healthy food choices, and we've been also talking about exercise, physical activity, about half an hour a day. So this is very important because it has been shown that even around 5% weight loss can lead to improvement of symptoms in PCOS. And lifestyle modifications are also very important in PCOS because of the attendant metabolic risk. So we've been talking about how PCOS is a risk and can lead to diabetes and hypertension and abnormal cholesterol levels. So lifestyle modification here is very important to prevent these metabolic complications of PCOS as well. So now we've been talking about PCOS. We'll move on to something more ominous, like breast cancer. So let's ask Dr. Divya. So can breast cancer be diagnosed early, and what are the tips that every woman should follow? Is it self-examination or is it mammography, and when do we go for that? Can you elaborate on that, Dr. Divya? Thank you, Dr. Annie, for asking this question. I think it is really, really very important to discuss more and more on such platforms so that everybody can be aware of that the breast cancer
can be detected very early and it can be prevented also if it is detected timely and the timely treatment has been started. So मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर जैसा एक बहुत खतरनाक बीमारी जिससे कि जान को भी खतरा हो सकता है और काफ़ी हद तक हम परेशान हो सकते हैं, इसका निदान और निवारण दोनों संभव है अगर हम समय पर इसको पहचान पाएं, समय पर इसका इलाज ले पाएं। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि हम इसको समय पर पहचान पाएं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। आजकल हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मेरा आप सबको यही कहना है कि अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना आप 30 साल की उम्र के बाद शुरू करें। और सबसे आसान है कि जब आप स्नान करते हैं या नहाने जाते हैं, उस समय सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। अगर मिरर है तो मिरर के सामने खड़े होकर स्पेशली अपनी फिंगर्स से, इस तरह से फिंगर्स की, नॉट केवल टिप्स, आप फिंगर के पर्ल से अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। नॉर्मल ब्रेस्ट का कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी ब्रेस्ट की फील क्या है, उसकी स्किन कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई भी चेंज आप नोटिस करते हैं अपनी ब्रेस्ट की फीलिंग में या स्किन में, तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। मैमोग्राफी नाम से एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत लगभग हम ये माना जाता है कि किसी भी तरह के लंप या गांठ डेवलप होने के 2 साल पहले ही मैमोग्राफी जो है उस कैंसर का पता लगा सकती है। और ये एक सिंपल एक्सरे की तरह से है, जिस तरह से और अंगों का एक्सरे होता है उसी तरह से ब्रेस्ट के एक्सरे को हम मैमोग्राफी कहते हैं। तो मैमोग्राफी हर नॉर्मल सिटी में, हर एक कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े सिटी में अवेलेबल है, आपके सिटी में भी अवेलेबल हो सकती है। और अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा चेंज अपनी ब्रेस्ट में महसूस होता है, तो मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे रिक्वेस्ट करें और मैमोग्राफी करने की एडवाइस लें उससे, और उससे हम जल्दी से जल्दी ये पता भी लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। और अगर समय पे पता लग गया तो समय पर इलाज से बहुत हद तक हम इसको बचाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एनी ने मुझसे पूछा कि क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप सबको दे सकूं जिससे कि काफ़ी हद तक आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, जो कि एक सबसे कॉमन कारण है कैंसर का, सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में होने वाले सारे कैंसर्स में। तो हम सब जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया तब से हम बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो किसी भी तरह के कैंसर से बचने के लिए या फिर ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। ओवरवेट होने से बचना है तो हमें अपने वज़न को नियंत्रित रखना है, वज़न को कंट्रोल में रखना है। और अगर ज़्यादा वज़न है तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने वज़न को कम कर पाएँ। और गलत तरह के खाने से या फिर ओवर ईटिंग से या फिर बाहर के फूड खाने से या प्रिजर्व फूड खाने से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डॉक्टर बेनी ने भी बताए जो कि हमें बचाव करना चाहिए, जिनको खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। अनलेस कि कोई इमरजेंसी ही ना हो, वंस इन अ वीक, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही ना खाएं, कोई पनिशमेंट है आपके लिए। लेकिन हाँ, उसको अगर आप नियंत्रित मात्रा में खाते हैं या कभी कभी ओकेजनली लेते हैं तो दैट इज अलाउड। लेकिन रेगुलरली ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वज़न नियंत्रित रखना हर हाल में आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से किसी भी तरह की कसरत, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक पनिशमेंट की तरह से वॉक करना है या रनिंग करना है। गार्डनिंग करना, हाउस होल्ड वर्क करना या फिर साइकिलिंग करना या कोई भी हॉबी, जैसे डांसिंग है आपकी हॉबी या फिर कोई स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है, तो इन सब को भी अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करिए। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स तक अगर आप किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहते हैं तो आप अपने आप को एक एक्टिव रख सकते हैं और अपना वजन नियंत्रित रख सकते हैं और इस तरह के कैंसर से बच सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग,
किसी भी और तरह के कैंसर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए भी आपको अल्कोहल और स्मोकिंग इसका सेवन नहीं करना है या कम से कम करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको ये बताना भी चाहूंगी, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी हो, कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को 1 साल तक लगातार कराते हैं तो ये आपको काफ़ी लंबे समय तक, या हो सकता है ऑलमोस्ट 99% तक ब्रेस्ट कैंसर से बचा सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना हम सब डॉक्टर्स का फर्ज है, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन का। लेकिन आप सबको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर आपको कैंसर से काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो इसके साथ ही मैं फिर से ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सब एक्टिव रहें, अपनी ब्रेस्ट को नॉर्मली डेली एग्जामिन करें। एक नॉर्मल फील ब्रेस्ट की क्या है, स्किन का क्या टेक्सचर है, ये पहचानें, और कोई भी चेंज है उसमें तो बिल्कुल समय ना खराब करके अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, और आप इस तरह से अपने आप को एक खतरनाक बीमारी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। Thank you once again, Dr. Annie, for asking this question. And my next question is to Dr. Beni. Ma'am, please explain, is cardiovascular disease indeed on the rise in women? And is there more death in women due to the cardiovascular disease? Over to you, Dr. Yes. Yes, thank you so much, Dr. Divya. And I think I'd like to put this in inverted commas, that cardiovascular disease is indeed on the rise in women, and we have to take note of that. And there's evidence for this. In 2019, the Diabetes Atlas has shown that globally there are more deaths associated with diabetes in women, 2.3 million, compared to men who are 1.9 million. So this is very alarming. And also they conducted a national survey in India, and they found out the reasons as to why the mortality of women is more than men. And the reason is that overweight, obesity, hypertension, diabetes has a higher prevalence in women than in men. And diabetic women are at least 5 times more prone to coronary artery disease and sudden cardiac death, 3 times much more than women. So we have to note this. And what could be the reasons for this? The reason could be that, first of all, there are challenges in recognition. Women and everybody else do not even recognize that women have a heart attack or a heart disease. This is because women have smaller coronary arteries. They have problems in the microcirculation compared to men who have blockages in the epicardial arteries. So if you do an angiogram in a woman, you might see normal coronaries, whereas in a man, you will see blocked coronaries. And that is the reason sometimes women have very vague symptoms like giddiness or discomfort in the chest or pain in the epigastrium, and also lightheadedness, nausea. So these are all atypical symptoms, and 30% of the women present with atypical symptoms and are not recognized both by the patient or the women themselves. They think it is due to gas and they just take some or something, and it passes on. And it is not even recognized by the doctors because these symptoms are so atypical. And because the women have problems in the microcirculation in diabetes, the women present more with cardiac failure, or heart failure, which is more on the rise compared to the men. The women have also high risk factors, more atherogenic dyslipidemia, that is more of cholesterol, more of triglycerides, and more of low density cholesterol, and that gives rise to blockages in the arteries. Women smokers also have high risk of heart attack compared to men. And then there are natural stressors for women like pregnancy. Pregnancy is the stress test for the heart. And if they have a good heart, then of course pregnancy goes well and mortality is less. But if they have a heart that is already affected, then it produces a lot of problems in pregnancy. And now menopause increases the risk of cardiovascular disease because of premature ovarian failure. And all these risk factors
can be tackled with good lifestyle changes. And all the speakers today have mentioned this, so I'm not going to say this again and again, that we need to change the lifestyle. We need to exercise more, have a healthy diet, stop smoking, have less alcohol, less salt, and exercise at least 30 minutes a day to have a good healthy heart, so that women's cardiovascular disease now come down lower than men. Thank you. And having said that, we go to the most important question now to Dr. Beatrice Anne, because preconception care is important to ignite women, and that is most of the time neglected, because we have to take care of the future generation. And Dr. Anne, can you just elaborate on this? Yes, ma'am. So the well-being of women, newborns, children, they're all interlinked, and care should start from the preconception period. And the idea of a preconception care is to target existing risks before pregnancy, like optimization of weight. So both underweight as well as overweight and obesity should be dealt with, and correction of nutritional deficiencies like anemia, say for example. So all this have to be corrected before the lady gets pregnant. Folic acid supplementation is again something that we recommend for ladies who are planning pregnancy to prevent neural tube defects, and treatment of pre-existing chronic illnesses so that the disease is under control before the lady plans a pregnancy. And as an endocrinologist, I will also be worried about the metabolic health of the lady. So let's say the lady has diabetes. So again, the sugars have to be brought under control before the lady becomes pregnant to avoid congenital anomalies in the developing newborn. And about the blood pressure, again, have to be optimized. The lady has any thyroid disorders, that again have to be treated and brought under control. And most important is a good lifestyle. We've been stressing so much about a good lifestyle. Now this is very important even in the preconception period. So good healthy food choices and physical activity, and avoid smoking and alcohol consumption. And mental well-being again is something very important in the preconception period. So over to you, Dr. Purvi. Thank you, Dr. Beatrice, for that wonderful description. But on my part, I think this has been a great, great session, and what a lovely tribute to the, from RSSDI Diabetes Bytes to on International Women's Day. And we must thank each of you for this absolutely wonderful session, very informative with a lot of take home messages, a lot of emphasis on lifestyle changes for women, and a very strong message that finally women need to prioritize their health, uh, regular checkup, meeting doctors, and of course regular treatment choices as well. So with that, I know each one, all of you audience would have enjoyed this session, but let me tell you on the back that each of the experts today had commitments as well as last minute changes in their plans, but they still made it to this show just for you all because they care. They are very passionate about making a change in the lives of other women as well. So with that, I thank you. But we do want to leave you with a very strong message on International Women's Day from RSSDI Diabetes Bytes. And I invite Dr. Rucha, who's made an acronym, and then each of us will spell out the word women. So since we all spoke so much, if you can't remember everything, I would say we'll just have this. So W is for wellness at all stages of life. As you heard, our hormones change. So wellness at every point in life, right from an adolescent to when you start having your periods, to when you preconception, pregnancy, menopause. So W is my word, and I emphasize wellness at all stages and learn about it. So the Dr. next Benjamin? alphabet is O. O is for ovarian health and yoga. We know that
It is the actually the ovaries which give us the protective hormones estrogen, which can get haywire in all diseases and also in menopause. So keep your ovarian health intact and practice yoga and exercise. Dr. Divya, ma'am. Yeah, so next letter is M. So men, I have to say to all men to do start respecting all females of your family as well as for the society. So do start respecting, and we have to start with our family. Educate your boys that start respecting females and give importance to female education as well as female health. So my letter is M. So my letter is E, E for exercise. We've been talking about exercise for 30 minutes per day. And so let's break the bias this year, and let's also break the sitting cycle. My letter is N, and N for new vistas to be explored. Let's learn more. Let's explore more options where we can prioritize our health. We can prioritize exercise in our daily schedule. We can prioritize healthy eating and also regular testing. So, and learning new and new methods of either losing weight or maintaining our good health and wellness. So, with that, we really thank you for this wonderful tribute on Women's Day and a very strong message. Prioritize the health, because only when the health of a woman is in safe hands can she make that change or that ripple effect in the family as well as in society. So thank you again, all of you, and thank you, audience, for logging in. Thank you. Thank you so Thank much. you Thank you all so of Thank much. you, everybody. Thank Thank you. you.